हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो क्लास में क्लास 9th का लेसन फर्स्ट बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। एट फर्स्ट, व्हाट इज सेल? A cell is a tiny mass of protoplasm which is surrounded by a membrane and is capable of performing all function of life. That means organisms का बॉडीज ठीक उसी प्रकार से सेल से बना होता है जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक से, ईंट से बना होता है। कह सकते हैं कि सेल्स आर द बेसिक्स एंड फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज it is the smallest unit and also it performs all the metabolism functions, all the process which are essential for the survival of an organism. इस वीडियो क्लास में सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सबसे पहले हम आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। Robert Hooke discovered at first in 1665 in a thin sliced cork. प्लांट्स के स्टेम के वाक के कॉक में, उसके थीन स्लाइस में माइक्रोस्कोप से जब उसने ऑब्जर्व किया तो सबसे पहले सेल्स को देखने वाला रॉबर्ट हुक है, जिसने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उसने ऑब्जर्व किया कि ठीक मधुमक्खी की छत्ते की तरह, और उसको नेमिंग किया सेलुली और सेल्स, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। तो सेल्स जो है लैटिन वर्ड से लिया गया, चूंकि रॉबर्ट हुक को ऐसा लगा देखने में कि वह एक स्मॉल कंपार्टमेंट की तरह, एक स्मॉल रूम की तरह है, और स्मॉल रूम को लैटिन लैंग्वेज में सेल्स कहा जाता है। ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन ए बुक नेम्ड माइक्रोग्राफिया। इस वर्क को, इस डिस्कवरी को उसने अपने बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया था। एंटोन वॉन ल्यूनहॉक in the year of 1674 at first time he saw the living cells. Robert Brown discovered the nucleus in the cell in 1831. रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले सेल के न्यूक्लियस के बारे में बताया। J.E. Purkinje in the year of 1839 used the term protoplasm. Protoplasm, that means the living substance present inside the cell, including the cytoplasm and the nucleus. Now cell theory. Cell theory was formulated by two biologists, M.J. Sheldon and T. Scaven. M.J. Sheldon in 1838 and T. Swan in 1839. Rudolf Virchow in 1855 stated in Latin as omnis cellula e cellula. Omnis cellula e cellula, that means new cells arise from the pre-existing cells. By the cell division, all new cells are arisen from the pre-existing cells. Therefore, cell theory states that bodies of living beings are made up of cells and their products. First is, bodies of living beings are made up of cells and their products. Second theory, activities of an organism. Activities of an organism are the sum total of activities, total of activities
of its cells. Cells develop from pre-existing cells. Not viruses are exceptions to cell theory. कहने का मतलब वायरस जो है वो सेल थ्योरी में एप्लीकेबल नहीं है, या कह सकते हैं कि सेल थ्योरी जो है वो वायरस के लिए एप्लीकेबल नहीं है. A smallest cell in the world, in the nature, mycoplasma, PPLO. In the nature, the smallest cell is mycoplasma and the largest cell is egg of ostrich. If we talk about, if we would talk about largest animal cell, that is nerve cell. Largest animal cell is nerve cell. Now we will discuss about the main parts of cell. There are three main parts of cell. That is plasma membrane, nucleus, cytoplasm. Plasma membrane or cell membrane, nucleus, cytoplasm. Note, plant cells, fungi and many bacteria have an additional covering of cell wall over them. That means the outermost covering layer of the cell in animal is plasma membrane, but in the case of some bacteria, fungi and plants, the outermost layer of the cell is cell wall. Here at first we will describe about the plasma membrane or cell membrane. The outermost delicate elastic membranous covering of the cell that separates its contents from the external environment is called plasma membrane. Plasma membrane is a selectively permeable membrane because it allows in and out of the selected substances. It is a living flexible membrane. Its thickness is 6 to 8 nanometer. It is made of a bilayer of lipids, which is also known as phospholipids. Plasma membrane is very flexible, delicate, elastic membrane which is the outer covering of the cell. It is also known as selectively permeable membrane. Selectively, that means it allows in and out of the material which are selected, that means which are useful for the cell, and it does not allow to enter the materials which are harmful for the cell. Function of plasma membrane: it provides a definite shape to semi-fluid contents of the cell. It provides a definite shape to semi-fluid contents of the cell. Mechanical barrier: plasma membrane protects internal contents of the cell. Selective permeability: plasma membrane determines what substances are to be allowed entry or exit from the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह सुनिश्चित करता है कि किस सब्सटेंस को सेल के अंदर आने चाहिए और किस सब्सटेंस को बाहर जाना चाहिए, लाइक वेस्टेज और टॉक्सिक सब्सटेंसेस. Endocytosis: the plasma membrane enables the cell to engulf food and other substances. Amoeba acquired its food by this process. By the process of endocytosis, some cells engulf the food materials and other substances. Osmosis: it occurs due to presence of tiny water channels. ऑस्मोसिस प्रोसेस सेल में जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर
उपस्थित वाटर के कारण। रिकॉग्निशन, द सबस्टांसेस present on the surface of the plasma membrane which function as recognition centers and points of attachment. It helps in tissue formation, defense against microbes. These are the functions of plasma membrane. So we can say that plasma membrane perform a very important role in a cell.